Hello students. The ecological pyramids. We know each ecosystem has specific trophic structure, means specific arrangement of animals according to their food and feeding habitats. Animals are arranged according to their food and feeding habitats. And in the ecosystem or in food chain of ecosystem, the green plants are the food producers. Okay, we call it as a producer level. Then primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. These are the heterotrophs and these consume the food from the other trophic levels. Okay. Now the green plants constitute first trophic level, that is producers. By means of photosynthesis, green plants produce the organic food, that is carbohydrate, proteins and fats. Then herbivorous animals consume food from the first trophic level. They eat plants, plant leaves, fruits, etc. Then secondary consumers eats the flesh of primary consumers. Means they take the nutrition from the second trophic level. And third trophic level animals take the nutrition from third trophic level, that is secondary consumers as well as primary consumers. Now, for knowing the information about trophic levels of ecosystem, the Charles Hilton has prepared the graphical representation of the trophic level. For knowing the information about the trophic levels of ecosystem, this scientist has prepared graphical representation. Then how to write the ecosystem on paper by means of graph. Then this graphical information or graphical representation is called as ecological pyramid. This ecological pyramid shows the structure of ecosystem, then function of ecosystem, and the all about idea, all idea about the structure and function of the ecosystem. It also shows the how much energy produced, how much energy is present in each trophic level, how the energy or food is transferred from first trophic level to second trophic level. This picturized form of ecosystem is given by the Charles Hilton, which is called as the ecological pyramid. Ecological pyramid is the graphical representation of the trophic levels of ecosystem. Okay. Now, in another words, the ecological pyramid is a diagrammatic view that shows the structure of different trophic levels of ecosystem. Then size of organisms, amount of food present in the ecosystem, availability of food in ecosystem, then method of feeding of organisms, again populations of organisms in the ecosystem, energy present in the ecosystem, etc. All the facts are shown in the ecological pyramids. Then there is certain rules for the plotting of the ecological pyramid. The main rule is the plotting of pyramid, ecological pyramid. During the plotting of ecological pyramid, the first trophic level should be at the base of pyramid. Base ko first trophic level, and successive trophic level forms the apex of pyramid. See this diagram. This is the ecological pyramid. This is this first trophic level, second trophic level, third and fourth trophic level. Okay. This is the grassland ecosystem. In this ecosystem, first trophic level is taken as a base. At every type of in every type of pyramid, the first trophic level means producer level should be taken at the base of this diagram.
or base of this graphical representation or pyramid. Then successive trophic level forms the apex of pyramid. Successive means one by one. Over first trophic level, there should be second trophic level. Over the third trophic level, there should be over second trophic level, there should be third trophic level. And at the apex, there should be fourth trophic level. Okay. Such type of graphical representation of trophic levels of any ecosystem is called as the pyramids, ecological pyramids. Now there are three types of ecological pyramids. Ecological pyramids, in ecological pyramids, there are pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. Okay. This ecological pyramid shows the all the structure and function of the ecosystem, biotic components of ecosystem. Means here we have plotted this big box of first trophic level. It means there are many numbers of plants or quantity of plants is more. See in fourth trophic level, the box of this fourth trophic level is very much small. It shows that the animals present or organisms present in fourth trophic level are less in number. Okay, then we have taken the producer at base and successive trophic level from the apex. पहले ट्रॉपिक लेवल के ऊपर दूसरी ट्रॉपिक लेवल, दूसरी की तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी ट्रॉपिक लेवल. Means this arrangement of pyramid shows the feeding habitats of the organisms in ecosystem. हमने ये प्रोड्यूसर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स दिया. It means these primary consumers take food from the first trophic level. हमने secondary trophic level is taken over the second trophic level takes over the first trophic level. Then second trophic level takes over the third trophic level. ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हमने सेकंड के ऊपर क्यों ली है? बिकॉज दिस organisms present in third trophic level takes the food from second trophic level, and this fourth trophic level takes the food from the third trophic level. Okay, this is about the ecological pyramid. Now the types of ecological pyramid. According to the data of ecosystem, the ecological pyramids are divided into three types. हमारे पास जो डाटा है इकोसिस्टम का, हमारे पास ऑर्गेनिज्म के नंबर है और क्वांटिटी ऑफ बायोमास है, उनमें बायोमास कितना है और एक इकोसिस्टम में एनर्जी कितनी है. जो हमारे पास डाटा है वो डाटा के हिसाब से दैट ecological pyramid are divided into three types. First type is pyramid of number. Pyramid of number. This is the graphical representation which shows the numerical relationship of organisms in a particular ecosystem. Graphical representation or pyramid shows the numerical relationship of organisms in particular ecosystem is called as pyramid of number. Means the number of organisms. We have the data of number of organisms present in the ecosystem. हमारे पास डेटा है प्रोड्यूसर लेवल पे कितने प्लांट है, देन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हर्बिवोरस एनिमल्स कितने हैं, देन स्मॉल कार्निवोरस कितने हैं सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में के, देन जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में है बिग साइज प्योरली कार्निवोरस एनिमल्स वो कितने हैं. हमारे पास ये नंबर्स का अगर डेटा है तो वी कैन प्लॉट द pyramid of number. This pyramid of number represent the numerical relationship of organism among the trophic levels of food chain. Okay. In this pyramid of number, it is necessary to count the organisms present in each trophic level of ecosystem. And by the rule, first trophic level forms the base and successive trophic levels form the apex of pyramid.
Okay. Now, during the plotting of this pyramid, the size of boxes of pyramid should be plotted by considering the number of organisms. This size of boxes of pyramid should be plotted according to the size of number of organisms. Means first topic level में हमारे पास data है, we have calculated that number of plants, then number of animal in third topic level and fourth topic हमने animals count किए, ये plant भी count किए. हमारे पास अगर 10,000 plants है, ठीक है, स्मॉल इकोसिस्टम है, उसमें 10,000 plants है, then second topic level में 5,000 एनिमल है या 2,000 एनिमल, मीन्स ये 10,000 ऑर्गेनिज्म जो है इसका बॉक्स बड़ा रहेगा, बराबर है. देन इसमें प्राइमरी कंज्यूमर में इससे नंबर कम है, वो हिसाब से हम इसका बॉक्स का साइज बनाएंगे. इन फोर्थ ट्रॉपिक लेवल द प्योर कार्निवोरस एनिमल्स और टर्शियरी कंज्यूमर एनिमल्स are always less in each ecosystem. Hence, this post for the box of this fourth trophic level should be small. Okay, now in this type of pyramid in forest, grassland, and pond ecosystem, the number of plant species are more abundant and forms the wide base of pyramid. See this diagram. In the pyramid of number in grassland ecosystem, then pyramid of number in forest ecosystem, and pyramid of number in pond ecosystem. In these three ecosystems, the number of producers are very much more. We are studying the pyramid of number. हमारे पास नंबर से ऑर्गेनिज्म से, और वो नंबर के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसकी डायग्राम निकल रहे हैं, ग्राफ निकल रहे हैं, पिरामिड निकल रहे हैं, ठीक है. देन the number of organisms present in producers or plants in producers are very much more than the other trophic levels. In these three ecosystems, the number of plants present in the first trophic level are very much more. Hence, it forms the wide base. ये जो pyramid है इसके base तो wide है, बराबर है. Then the number of primary consumers are lesser than the producers, इसलिए इनका box छोटा है, बराबर. Like that, the number of tertiary consumers, these are very less in number in each ecosystem, grassland, forest, and pond ecosystem. Hence, we have taken this small box for this trophic level. Okay, and due to this gradual decrease of number of organisms from producer level to the tertiary consumer levels, this pyramid shows the upright structure. Why this showing the upright structure? Because the number of organisms are decreasing from base to the apex. Base से ज़्यादा है और apex में successively कम हो रहा है. Then due to this reason, in these three ecosystems, grassland, forest and pond, these graphs shows the, or this pyramid shows the upright structure, खड़ा structure निकलता है. But in contrast with the pyramid of number in parasitic food chain. In parasitic we have seen parasitic food chain. Parasitic food chain में क्या रहता है? Producer is one single largest fruit yielding tree. बराबर है, वो ट्री पे birds रहते हैं, parasites. They eat the fruits of that trees. Okay, for example, banana trees. Then some insects are present on the body of these birds. These are secondary consumers. Okay, now the fourth trophic level tertiary consumers are the bacteria and fungus, which are hiding on the bodies of that insects. This is the parasitic food chain. यहाँ पे सभी parasites है. ये ट्री पे रहने वाले birds parasites है. बर्ड के बॉडी पे रहने वाले ये जो insects है, smaller insects, lice, those, etc. These insects are hiding on the body of birds like the
as a parasite. They suck their blood and fulfill their nutritional requirement. And on the bodies of these insects, certain bacteria and fungus are present. This bacteria and fungus also takes the food from the body fluids of that insects. इनके body पे ये bacteria and fungus रहते हैं. And this constitutes the parasitic food chain. Now, when we see the pyramid of number in parasitic food chain, what happens? Pyramid of number. We are counting the number of organisms in food chain. In this parasitic food chain, the number of producer is only one. Barabar. Hence, this base of pyramid shows the very small space. Okay. At the by the rule of plotting pyramid, the first trophic level should be taken at the base. हमने base पे first trophic दिया. But here in case of parasitic food chain, the number of organisms or number of plants present in the first trophic level is very much low. Hence, we have taken this small box. Then, number of birds present on the tree. These are more in number. Hence, this we have taken this larger box. ये birds के body पे रहने वाले जो smaller insects है, lices, insects and lices, वो और ज़्यादा number में होंगे. बराबर. Hence, we have taken this third trophic level, the structure of third large structure of third trophic level. And in fourth trophic level में क्या है? Algae and fungus present on the body of insects. ये तो बहुत ज़्यादा number होंगे. Okay. Hence, in this pyramid of number, in parasitic food chain, the number of organism increases from base to the top of pyramid. Base से first trophic level से fourth trophic level तक क्या हो रहा है यहाँ पे? Number of organisms increase हो रहे हैं. Hence, due to this condition, this pyramid shows the inverted structure. बराबर है. यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है? पॉन्ड या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा थे, ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ज्यादा थे, देन कम होते जा रहे थे, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. हेंस it is showing the upright structure. But in case of parasitic food chain, the number of organisms are increasing from first trophic level to fourth trophic level. Hence, the pyramid of number in parasitic food chain shows the inverted structure, ulta structure. Okay, this is the pyramid of number. Okay, we can plot these pyramids by taking the square box also. Okay, we can plot by taking this triangular shape or by taking the square boxes. Okay, this is the pyramid of number in grassland ecosystem. This pyramid of number of ponds ecosystem, pyramid of number of forest ecosystem. Okay, this is the forest system. This pyramid shows the different structure because in this pyramid small area of forest is taken into consideration. एक छोटा एरिया फॉरेस्ट का अगर हम कंसिडर करते हैं जहाँ पे प्लांट्स कम है तो वहाँ पे इसकी डायग्राम छोटी आएगी. ओके, हियर यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इन दिस केस वी हैव टेकन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट. उसमें हमने ऑर्गेनिजम्स काउंट किए, ये ज्यादा निकले. बट इन दिस केस ऑफ forest ecosystem, we have chosen particular area, and in that area of forest we count the number of organisms और इतने हमें नंबर मिले. वो इकोसिस्टम में हमें प्लांट्स कम मिले, इसलिए ये जो प्लांट्स का बॉक्स हमने छोटा दिखा है. प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर ज्यादा था इसलिए ये बड़ा बॉक्स लिया. सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स से कम थे इसलिए इससे छोटा हो गया बॉक्स. टर्शियरी कंज्यूमर्स सबसे कम थे इसलिए उसका बॉक्स एकदम छोटा दिया. ओके, दिस इज द graphical representation. Pyramid of number is a
graphical representation of any ecosystem by considering the number of organisms present in the ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, एनिमल्स या प्लांट्स कितने हैं, वो कंसिडर करके हमने जो डायग्राम बनाया है दैट इज कॉल्ड एज pyramid of number. Okay, see, this is the triangular structure of pyramid and this is box structure of pyramid. Okay, these both pyramid are same. हमने यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस. these two pyramids are same. Okay, now there are certain complications which are associated with the pyramid of number. When we plot the pyramid of number, हम जब pyramid of number plot करने का और कागज पे उतारने का ट्राई करते हैं, उसमें some complications आते हैं. There are certain complications. कौन कौन से? अगर हमें डाटा लेना रहा, although the data needed to construct this pyramid can be easily obtained, हमें डाटा तो मिल सकता है, हम कैसे भी करके प्लांट्स एनिमल्स कितने हैं वो गिन लेंगे at from by the any method. There are so many methods to count the plants and animals. But in this pyramid, the size of organisms are greatly varied. ये pyramid में animal का size हम दिखा नहीं सकते. And in this pyramid, the size of elephants are so big, and size of mouses are or rabbits are so small. But both these animals, elephants and rabbits, are placed in primary consumer level. तो ये पिरामिड में हम साइज ऑफ एनिमल नहीं कंसीडर कर सकते. ओनली वी कैन प्लॉट दिस पिरामिड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन present in this pyramid of number. We cannot measure the or we cannot show the size of animals or size of plants in this pyramid. Then again, दूसरी फैक्ट कौन सी है? इन बिग इकोसिस्टम्स, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, ओके, देन इन डेजर्ट इकोसिस्टम आल्सो the number of living organisms is so great then it is difficult to draw the pyramid in scale. वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर रहता है वो इतना ज्यादा रहता है कि हमें पिरामिड प्लॉट करने में दिक्कत आती है. ओके, then according to plotting the number of pyramid in such condition, we have to use the logarithmic scale. Logarithmic scale means हमें अगर बहुत बड़े फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, बहुत बड़े एरिया की इकोसिस्टम है, उसका अगर पिरामिड ऑफ नंबर प्लॉट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लॉगरिथमिक स्केल लेना पड़ेगा. अगर वो फॉरेस्ट में 1000 मिलियन प्लांट्स होंगे तो 1000 मिलियन हम वहां पे अगर लिख नहीं सकते. अगर लिखे तो भी उसमें जो जीरो है तो लोगों के समझ में नहीं आएगी, बराबर. हेंस वी हैव टू यूज द लॉगरिथमेटिक स्केल. तो हम क्या करते हैं? उसमें परसेंटेज लेते हैं. ओके, परसेंटेज मींस कितने परसेंट है प्लांट, कितने परसेंट है, देन प्राइमरी कंज्यूमर कितने परसेंट है प्लांट्स के कंसिडरेशन में, देन द अदर एनिमल्स थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कितने परसेंट है. तो हम वहां पे परसेंटेज लेते हैं. और एनी लॉगरिथमिक स्केल वी हैव टू यूज टू प्लॉट दिस पिरामिड ऑफ नंबर. ओके, देन pyramid of biomass. This is the another type of pyramid. Total dry weight of the total living material at one time in a food chain forms a pyramid of biomass. Now, what is the biomass? Biomass means the dry weight of the living organisms. For example, प्रोड्यूसर लेवल है. प्रोड्यूसर लेवल में जो प्लांट है वो प्लांट हमने पूरे उखाड़ लिए, उनको ड्राई किया और उनका वेट किया. ओके, एंड दिस वेट इज कॉल्ड एज बायोमास. ओके, तो
वो इकोसिस्टम में कितना बायोमास है, how much biomass is present in the ecosystem. According to that biomass, we can plot the pyramid of biomass. The total dry weight of total living material at one time in a food chain forms a pyramid of biomass. टोटल ड्राई वेट हमें उसका निकालना है, ऑर्गेनिजम्स का मीन्स प्रोड्यूसर हमने निकाल के ड्राई करके वेट लिया, देन प्राइमरी कंज्यूमर एनिमल्स इकोसिस्टम से निकाले, उनको ड्राई किया, फिर उसका वेट किया, लाइक थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल का भी वैसा ही किया. Okay, so that is called as dry weight. Okay, but the total dry weight of total living material mean living organisms at one time हमें वो एक ही टाइम पे लेना है. ये तो आज हमने प्लांट्स ड्राई किए, कल एनिमल ड्राई किए, ऐसा नहीं है. चारों भी ट्रॉपिक लेवल के हमने एक समय पे एट वन टाइम व्हेन वी take the dry weight of all organisms, it gives the biomass. Okay, this biomass means the dry weight of all living organisms present in the ecosystem of food chain or food chain. Bio means living organisms and mass means the weight. At any particular time, the dry weight of all living organisms present in all trophic levels in a particular food chain of ecosystem is called as biomass of the food chain. Food chain का biomass हम किसे कहेंगे? At one time when we have taken the dry weight of all trophic levels at same time, उसका जो weight आएगा उसको हम कहेंगे the biomass. By considering the biomass we can plot the graphical representation or pyramid. The pyramid of biomass can be plotted by considering the biomass of each trophic levels present in the food chains. Now this pyramid of biomass shows the presence of food in each trophic level of the ecosystem. The pyramid of biomass हमें क्या बताता है? ये इकोसिस्टम के हर ट्रॉपिक लेवल पे फूड कितना है, बराबर. सी हियर, दिस इज द pyramid of biomass. Okay, general pyramid of biomass. This is pyramid of biomass in forest ecosystem. Okay, see in forest ecosystem what happens in particular ecosystem. Here हम forest ecosystem बोल रहे हैं, इसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया लिया है छोटा सा, वो एरिया में एरिया की जो इकोसिस्टम है उसका हमें क्या करना है, ग्राफिकल ग्राफ निकालना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और पिरामिड प्लॉट करना है. तो हम क्या करेंगे, we have taken the dry weight of these plants. ये for example 1000 kg है. Then we have estimated the dry weight of this primary consumers. इन्हें कीप किया, ड्राई किया, उसका वेट लिया, बराबर है. ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हमने वैसा ही किया. तो हमें इतने बायोमास इतना बड़ा, इसका वेट 1000, देन सेकंड ट्रॉपिक में 100 kg मिला, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में 10 kg और हियर 1 kg मिला फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में. तो दिस इज द बायोमास. और ये बायोमास कंसीडर करके हमने क्या किया, यहाँ पे पिरामिड बनाया. ओके, इन दिस फॉरेस्ट इकोसिस्टम दिस पिरामिड शोज द अपराइट स्ट्रक्चर. क्योंकि फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है, प्लांट्स बहुत ज्यादा नंबर से रहते हैं, उनको वो प्लांट्स हमने कलेक्ट किए, उसका ड्राई करके वेट लिया, तो सबसे ज्यादा ही आएगा, बराबर है. बाय कंसीडरिंग द ड्राई वेट ऑफ organisms we have plotted this pyramid, and according to rule the pyramid should be plotted by taking the first trophic level at the base, first trophic level, and successive trophic levels form the apex of pyramid. Okay, now see in pond ecosystem. pond ecosystem में प्रोड्यूसर्स कौन से रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. हमने पूरे पॉन्ड के प्लांट्स अगर ड्राई करके वेट लिया तो वो सबसे ज्यादा ही आएंगे, बराबर है. सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जो हर्बिवरस फिशेस है और हर्बिवरस इंसेक्ट्स है, उनका वेट अगर लिए तो इससे कम आएगा, बराबर है. मींस द नंबर ऑफ बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ दिस पिरामिड.
नंबर ऑफ बायोमास, पहले हमने देखा नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, यहाँ पे हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग द नंबर ऑफ dry weight of the organism present in each trophic level. When this dry weight or biomass decreases, gradually decreases from the base to the apex, base से apex तक, मीन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक अगर ये बायोमास डिक्रीज होते जा रहा है, then this pyramid of biomass in such condition shows the upright structure. Okay, this is the pyramid of number. Okay, sorry, this is the pyramid of number. But in pyramid of biomass in pond ecosystem, sorry, हम ये pyramid of number का स्टडी कर रहे हैं. Pyramid of biomass in pond ecosystem. Okay, see here. In pond ecosystem, this pyramid of biomass shows the inverted structure. यहाँ पे inverted structure बता रहा है. This is the pyramid of number and this blue is the pyramid of biomass in pond ecosystem. ये pond ecosystem में pyramid of number is showing the upright structure because here numbers are counted to plot this pyramid. Here in this case pyramid of biomass, the dry weight of organisms is taken in consideration to plot this pyramid. Okay, now in this pyramid of biomass in pond ecosystem, it shows the inverted structure because when we measure the aquatic plants and the phytoplanktons, means the organisms of first trophic level, the weight of these aquatic plants, algae and another microscopic plants, this वो weight जो है वो सबसे कम आएगा, है कि नहीं. देन हर्बिवोरस इंसेक्ट्स एंड स्मॉल फिशेस, वो अगर हमने कलेक्ट किए उसका ड्राई वेट लिया तो उससे ज्यादा आएगा, बराबर है. जब फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में लार्ज साइज फिशेस है, कार्निवोरस एंड लार्ज साइज फिशेस, उनका वेट ड्राई वेट अगर लिए तो इन सबसे ज्यादा आएगा. मींस द biomass, amount of biomass increases from base to the apex of pyramid, hence it forms the narrow base and wide apex. Inverted structure देगा. Okay, this is the pyramid of biomass in pond ecosystem. Now in pyramid of biomass in parasitic ecosystem, यहाँ पे दो pyramid दिखे. ये पहला है pyramid of number. This pyramid of number is showing the inverted structure. Okay, it is showing the narrow base and wide apex. But in pyramid of biomass in parasitic food chain, it shows the upright structure. When we measure the weight of large tree, fruit yielding tree, तो लार्ज ये जो ट्री है, ट्री का वेट जो है बर्ड्स एंड इंसेक्ट से कम ही आएगा, बराबर. यहाँ पे ड्राई वेट ज्यादा है, मीन्स वी हैव टेकन द लार्ज साइज ऑफ द बिग साइज ऑफ द बेस और बिग साइज ऑफ द ट्रॉपिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ज्यादा बायोमास है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में बर्ड्स है, बर्ड्स का वजन ड्राई वेट जो है वो कम है इसलिए ये छोटा लिया. लेकिन इंसेक्ट्स का वेट है उससे भी कम है. Hence, due to decrease of biomass from base to the top, यहाँ पे क्या हुआ है, बायोमास डिक्रीज हो रहा है, बेस पे ज्यादा है, एपेक्स को कम हो रहा है. तो इस सिचुएशन में ये क्या करेगा, इट गिव्स द अपराइट स्ट्रक्चर, खड़ा स्ट्रक्चर. बट इन पिरामिड ऑफ नंबर, दिस numbers are increasing from base to the apex and it is given the inverted structure, बराबर. Okay, then pyramid of energy. Now pyramid of energy, energy means food. हम क्या कर रहे हैं, by considering the energy we are plotting the pyramid. We already have idea about the energy. Energy क्या है, the sunlight is the major source of energy in all ecosystems, बराबर है. This producer plants trap the solar energy and prepare the organic food, or it is also called as precursors of energy.
ये फूड क्या है, ऑर्गेनिक फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स क्या है, दीज आर द प्रिकसर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रिकसर्स है, उससे एनर्जी तैयार होती है। मीन्स फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स और फॉर ऑर्गेनिक फूड वी कैन यूज द टर्म एनर्जी, वो एनर्जी है बट इन द प्रिकसर फॉर्म। ओके, the food chain is characterized by the flow of energy in the trophic level in the form of organic food। अभी एनर्जी जो ट्रांसफर होती है ईच इकोसिस्टम में, तो कौन से फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ फूड। प्राइमरी कंज्यूमर एनिमल्स eats the plants, may take the food from this first trophic level, means they take the energy precursors from the first trophic levels। वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फूड ले रहे हैं हर्बिवरस एनिमल, मींस they are taking the precursors of energy and they prepare the energy by using this food, by digesting this food। Okay, see in this situation in ecosystem, the producer level are the green plants, they prepare the energy। Okay, and this energy is transferred into the another trophic levels during the consumption of food by primary, secondary and tertiary consumers level। अब इसमें क्या होता है, इन दिस सिचुएशन of transfer of food in each food chain during the consumption of food by primary, secondary and tertiary consumer। ये जो फूड लेते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन है, ये ग्रेजिंग फूड चेन में फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, मींस जिसको चरना कहते हैं, वोरेसियसली फीडर। एक आधा एनिमल दिखा, उसको आधा खाया आधा छोड़ दिया, प्लांट्स लिया, प्लांट्स के लीव आधे खाए आधे छोड़ दिए, मींस मोस्ट ऑफ द फूड falls on the ground and undergo decomposition, means some organic food falls on the ground and undergo decomposition, and such in such condition for this food, this wastage food, we use the sentence that energy is lost, this is the loss of energy, loss of energy। प्राइमरी कंज्यूमर जब प्लांट्स खा रहे, फूड उनके बॉडी में जा रहा है, ओके, और वो बॉडी में उसको फूड को यूज कर रहे हैं, एनर्जी तैयार कर रहे हैं, बट when they left some plant leaves and branches on the ground, so this energy or this food is called as the loss of energy, क्योंकि वो फूड है, फूड इज द प्रिकसर ऑफ एनर्जी, वो फूड लॉस हो रहा है इकोसिस्टम में, मींस दिस इज द एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी प्रिकसर लॉस हो रहा है। नाउ दिस इज द pyramid of energy, by considering the energy we can plot this pyramid। Okay, this this is the pyramid of energy। Okay, this is the general pyramid of energy in forest or in grassland। Okay, forest, grassland or in another ecosystem। Okay, see in this condition these producers are having more energy। Why this is having more energy? Because the size and number of these plants are big, बराबर है। then primary consumers animals, वो कम नंबर में होंगे, उनके वेट कम होंगे, नंबर कम होगा, तो उनकी बॉडी में ये जो पूरे कलेक्टिवली हम अगर देखते हैं तो वो फूड कम होगा, ऑर्गेनिक फूड मींस एनर्जी कम होगी, बराबर है। सी हियर दिस प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर द organic food and store in their leaves and branches, or they store energy or food in their body, बराबर है। now these are the primary consumers, they eat the plants and prepare energy and store food in their body tissues। थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल भी वैसे ही, एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं और अपने बॉडी में स्टोर करते हैं, बराबर है, वो एनर्जी स्टोर करते हैं। मीन्स यहाँ पे जितना ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स है, तो यहाँ पे एनिमल्स कम होने की वजह से एनर्जी कम होगी,
यहाँ पे और कम होगी सेकेंडरी कंज्यूमर में, क्योंकि एनिमल कम नंबर में है, बराबर है। देन इन टर्शरी कंज्यूमर यहाँ पे एनिमल्स बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी कम होगी, बराबर है। अगर हमने वेट किया फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, उसका वजन किया लिविंग कंडीशन में पूरे प्लांट का, तो ज्यादा आएगा, मीन्स इनमें ज्यादा फूड ज्यादा है। अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स हमने प्राइमरी कंज्यूमर्स का लिविंग वेट किया तो इसका कम आएगा, मीन्स इसमें फूड कम है, इसका मतलब एनर्जी कम है। ओके, hence during plotting of this pyramid we have to mention the energy present in the pyramid, परसेंटेज में दो और लॉगरिदमिक स्केल में दो, but we have to mention the figure of energy of each topical। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो 0.65 W पर watt पर मीटर स्क्वायर। ओके, here 0.160 W पर मीटर स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया। ओके, here we have to show the loss of energy। जब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट्स को ईट करते हैं तो सम प्लांट फूड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, मींस वो जो ऑर्गेनिक फूड लॉस हो रहा है, दिस एनर्जी प्रिकसर्स लॉस हो रहा है, तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को प्रे कर रहे हैं, उनका फ्लेश ईट कर रहे हैं, बट सम बोन्स एंड सम फ्लेश इज फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड लॉस्ट और डिके, दिस इज द लॉस्ट ऑफ एनर्जी, बराबर है। टर्शियरी कंज्यूमर्स बाकी बाकी के एनिमल को प्रे करेंगे तो पूरा वो पूरा के पूरा नहीं खा जाते उसको, some bones, some flesh left on the ground and undergo decomposition, so such wastage energy is called as loss of energy। हमें loss of energy भी इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। now during the plotting of energy we have to show the major source of energy। this is the sun is the main source of energy। sun में से इतनी एनर्जी निकलती है, बराबर है, और इतनी एनर्जी ये प्लांट्स ट्रैप करता है, इतनी एनर्जी, बराबर है। अर्थ पे इतनी एनर्जी आती है 697.04 W पर मीटर स्क्वायर एंड प्लांट्स इतनी एनर्जी यूज करते हैं, ये हमें सब ये पिरामिड में दिखाना पड़ेगा। सन से एनर्जी कितनी आती है, देन ग्राउंड पे कितनी आती है, और उसमें से प्लांट्स कितने ट्रैप करते हैं। ओके, and this is 669.7075 W per meter square। This energy is the reflected energy। solar radiations falls on the earth and some of the solar radiations are reflected back into the space, this is the reflected energy। Okay, this is the pyramid of energy, like that we can plot the pyramid of energy in various ecosystems। Okay, these are the pyramid of energy in various ecosystems। pyramid of energy in grassland ecosystem, ग्रासलैंड में ग्रासेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसमें फूड ज्यादा होता है। फूड मीन्स द प्रिकसर ऑफ एनर्जी, बराबर है। दिस प्रिकसर ऑफ एनर्जी इज मोर इन दिस फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में क्या है, एनिमल्स कम है, उनका नंबर कम है, इसलिए क्या है, अगर हमने वेट किया ग्रासलैंड में ग्रासेस का और ये फर्स्ट ट्रॉपिक हर्बिवरस एनिमल का, तो ग्रासेस का वेट ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये ग्रासेस में फूड ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी प्रिकसर में एनर्जी ज्यादा है, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर में कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर में और कम है, एंड it is very less in the tertiary consumers because the number of these animals are very less। Okay, this is the pyramid of energy in cropland ecosystem। Okay, this is the pyramid of ecological pyramid। Okay, now in next lecture we will see the energy flow in the ecosystem।